तो वैसे इसमें मैं गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ, पर फिलहाल आपको बता दूँ P4S रियलमी का ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में, आने ही पर है, पर उससे पहले ही मैं यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाई दे रहा हूँ, जिसके साथ मुझे ट्रांसपेरेंट केस मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, गाइड करता है ये फ़ोन को। और सिल्वर कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्रीमियम लुक है बैक साइड से अगर देखा जाए। 80 वाट का आपको अडाप्टर देखने को मिल जाएगा और साथ में टाइप सी केबल भी आपको ए टू टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाएगी। तो बॉक्स के अंदर सब कुछ आता है, सिम टूल्स से सब कुछ, ठीक है? लुक बहुत अच्छा है, नॉच काफ़ी कम है। लुक मुझे ग्रे कलर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे IP69 तक का सपोर्ट है, तो पानी के अंदर डुबो-डुबो के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग की डिस्प्लेस के अंदर आपको मिली 6.7 इंच की, वो भी एमोलेड। याद रखिएगा, कलर बहुत शार्प होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। 144 का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 की चिपसेट लगी है। 7 लाख के ऊपर एंतुतु स्कोर आता है। और हाँ, इसमें आज जो BGMI है वो मैं बताने वाला हूँ, आपको शॉक लगेगा। इसमें 12 जीबी रैम, 256 जीबी स्टोरेज होगा और भी 2-3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएँगे। बैक साइड 50 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। बैक साइड से आप 4K 30 एफपीएस तक रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट से आप यहाँ पे 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी डिवाइस 5G है, सब कुछ मिलता है। बट बात करें BGMI को लेके, जिसके लिए मैंने आपको बताया है, तो आप इसमें 90 एफपीएस तक गेम प्ले कर सकते हो। और ये भी नहीं, 144 एफपीएस तक भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो बहुत कुछ, यानी कि गेमिंग के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। कैमरा क्वालिटी भी इसकी सब कुछ ओवरऑल अच्छा है। पर चलिए हम चलते स्क्रीन के अंदर। And play responsibly. First point for the red team! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end! The blue team is in the lead. The blue team's streak has just been put to an end. Killing spree for the red team! The red team's streak has just been terminated. Killing spree for the blue team! The blue team is heading to a perfect win. The blue team's streak has just been put to an end.
तो मैंने कोई कट नहीं मारा बीच में, जैसा हो रहा था वो दिखा रहा था। थोड़ी मेरी सेटिंग गड़बड़ है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ, पर मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला और काफ़ी अच्छी यहाँ पे गेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन में। फ़ोन गेमिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो फिलहाल अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो जाके बाय करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।